गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड्स 8 है, सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर के मैंने आपको वन वर्ड आंसर करवा दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिया। आज आपको मैं इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस करवाऊंगी जो आपको करने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी टू सेंचुरीज एंड एनी टू नेशनल पार्क्स। तो आंसर आएगा सेंचुरीज नंबर 1 भरतपुर सेंचुरी एंड लॉक चाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर नेशनल पार्क्स है कांजीरंगा नेशनल पार्क एंड सातपुरा नेशनल पार्क। नंबर 2 व्हाट आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो आंसर आएगा वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल existing on earth are essential for the well-being and survival of mankind. Number 3 what is the meaning of deforestation? The meaning of deforestation is clearing of forest and using that land for other purposes. Next question 4 what are natural causes of deforestation? Natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. What is sanctuary? The answer आएगा sanctuary is an area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. Number 6 why do global warming occur? Due to increase in the amount of carbon dioxide in atmosphere. आंसर आएगा ग्लोबल वार्मिंग ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर बिकम्स इट ट्रैप्स हीट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. नंबर 7 स्टेट द 2 इफेक्ट्स ऑन सॉइल ड्यू टू डिक्रीजिंग ट्रीज. तो इफेक्ट्स ऑन सॉइल ड्यू टू डिक्रीजिंग ट्रीज soil erosion increases and soil fertility decreases. Number 8 है what is the role of government to protect and conserve wildlife. आंसर आएगा the government lays down rules, methods and policies to protect and conserve wildlife. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो आंसर आएगा बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. नंबर 10 फॉर व्हाट डज बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प इन द रिलेटेड एरिया. तो आंसर आएगा बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन the biodiversity and culture in the related area. Number 11 who supports biodiversity. तो आंसर आएगा बायोस्फीयर रिजर्व सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी. नंबर 12 व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया. तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड land for conservation of wildlife, plants, animals and microbes and traditional life of the tribes living in the area. Number 13 mention to wildlife sanctuary is located in Panchmari Biosphere Reserve. The wildlife sanctuaries located in Panchmari Biosphere Reserve are Bori and Panchmari. Number 14 state flora Panchmari Biosphere Reserve. The flora of Panchmari Biosphere Reserve sal, teak, mango, jambu, silver, arjun, etc. Give few examples of the fauna of the Panchmari Biosphere Reserve. Examples of the fauna of the Panchmari Biosphere Reserve: chinkara, blue bull, barking deer, chital, leopard, wild dog, wolf, etc. Number 16 what are endemic species called. तो certain plant and animal species which are found exclusively in a particular area and are not naturally found anywhere else, such species are called endemic. Number 17 give 2 examples of endemic flora of the Panchmari Biosphere Reserve. आंसर आएगा 2 एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व साल एंड वाइल्ड मैंगो. 18 गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फौना ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो आंसर आएगा 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिक फौना ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर
reserve, bison, Indian giant squirrel. What is species? Species is a group of population which are capable of interbreeding. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर आएगा killing or capturing of animals is strictly prohibited in wildlife sanctuary. Next है what is zoo? Zoo is a place where some animals are protected in artificial habitat for public view. Next number है which is the first reserve forest of India? Satpura National Park is the first reserve forest of India. Next 23 how many rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reserve? A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reserve. Next number 24 what is the main cause for droughts? The main cause for droughts in disturbance in water cycle due to global warming and reduce the rainfall. Next number which ideas does rock shelters inside the Satpura National Park give us? The rock shelters inside the Satpura National Park give us an idea of the life of primitive people. Next what is Project Tiger? The government launched a project to protect and maintain the tiger population in country. It is called Project Tiger. Next, what is called endangered species? Give example. A species whose numbers are diminishing to a level that they might face extinctions is called endangered species. Example wild buffalo, Barasingha. Sorry. Next number 28. What makes an ecosystem? Biotic components such as plants, animals, microorganisms in an area, along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. combinedly make an ecosystem. Next 29 है what are used for manufacturing paper? For manufacturing paper, soft wood, water, energy and chemicals are used. Next 13 है for what is the Forest Conservation Act launched in India? The Forest Conservation Act launched for preservation and conservation of natural forest in India. Next और last है which is the only option to retain our green wealth for future generation? आंसर आएगा प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इन द ओनली ऑप्शन टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन. ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में आंसर सब लिखने हैं और इनको लर्न भी करना है. ठीक है, थैंक यू.